We all love our cars, right? ये हमें फ्रीडम और कंफर्ट देते हैं और हमारे डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। ये हमें एडवेंचर्स पे ले जाती हैं, काम पे पहुंचाती हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी प्यारी गाड़ियां भी पुरानी होने लगती हैं। बट व्हाट हैपेंस जब आपका ट्रस्टी पेट्रोल या डीजल इंजन थोड़ा पुराना होने लगता है? परफॉर्मेंस कम हो जाती है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। Well, before you even think about scrapping your beloved vehicle, एक super cool option है जो आपको जानना जरूरी है। EV retrofitting। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आपकी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। It's like giving your car a new lease on life, an electric one. Imagine, आपकी वही पुरानी गाड़ी, लेकिन अब जीरो emissions और कम रनिंग कॉस्ट के साथ। इस वीडियो में we're gonna dive deep into the world of EV retrofitting और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, समझेंगे कि ये क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स या सिंपल हो सकता है, why it's becoming crazy popular और क्यों लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं, and how it can benefit you and the environment। ये न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी। So buckle up and let's get electrified। चलिए इस इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी पुरानी गाड़ी को नया जीवन दे सकते हैं। In simple terms, retrofitting is like giving your car a heart transplant, लेकिन हार्ट की जगह it gets a brand new electric powertrain। इसका मतलब है कि आपकी पुरानी पेट्रोल या डीजल इंजन, फ्यूल टैंक और बाकी सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं। Once that's done, आप उन्हें रिप्लेस करते हैं an electric motor, a battery pack and a controller के साथ। It's like transforming your car from a gas guzzler to a silent, emission-free machine। Now you might be thinking, इतनी मेहनत क्यों? Why go through all this effort to retrofit your car? Well, the advantages are pretty awesome। Firstly, it's eco-friendly। कोई harmful emissions नहीं, which means you're doing your bit to save the planet। Imagine driving through nature, knowing you're not polluting it। Plus, think of all the money you'll save on fuel। With the rising prices of petrol and diesel, electricity is way cheaper। Charging your car at home is not only convenient, but also cost-effective। And don't even get me started on the maintenance। Traditional cars have so many parts that can break down, but electric cars have way fewer moving parts, meaning kam cheezein kharab hoti hai। This translates to fewer trips to the mechanic and more time enjoying your drive। Imagine the peace of mind knowing your car is reliable and efficient। Section 4. Gearing up. The retrofitting process। This is where the magic happens, transforming your old car into a modern electric vehicle। अब देखते हैं कि असली retrofitting process में क्या होता है। This process is intricate and requires precision and expertise। The first step is all about assessment। The mechanic will thoroughly inspect your car to understand its current condition। A qualified mechanic आपकी car's condition check करेगा and figure out करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। This involves checking the engine, transmission and other critical components। Next comes the fun part, the conversion itself। This is where the real transformation begins। यहाँ पर पुरानी इंजन को निकालकर इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक and all the electrical components लगाए जाते हैं। The old engine is carefully removed and replaced with a new, efficient electric motor। Then, they'll hook up the battery to a charging system, ताकि आप इसे घर पे या फिर charging stations पे charge कर सकें। This ensures that your car can be easily charged at home or at public charging stations। Finally, after rigorous testing and fine-tuning, आपकी पुरानी गाड़ी वापस सड़कों पे जाने के लिए तैयार है। This time, fully electric। The car undergoes multiple tests to ensure everything is working perfectly before it hits the road again। Section 5. New ride, new rules।
Updating your documents. एक आखिरी बात. Once your car is rocking that electric power, आपको authorities को बताना होगा. Yep, that means updating your vehicle registration documents and getting new license plates, जिससे पता चले कि आपकी गाड़ी अब an electric vehicle है.